Hello everyone, my name is Dr. Abu Tala and I am from Department of Oral and Maxillofacial Surgery, PG first year. Today's my seminar topic is impaction. These all are my contents: introduction, definition, theories of impaction, etiology, indication, contraindication, mandibular third molar impaction, maxillary canine impaction, and maxillary third molar impaction. Introduction. Although the scope of oral and maxillofacial surgery has expanded in many directions recently, the mainstay of practice remains dentoalveolar surgery. The atraumatic removal of impacted is one of the most common performed surgical procedure in specialty of oral and maxillofacial surgery. Definition. Archer gives his definition in 1975. According to Archer, a tooth which is completely or partially unerupted and positioned against the another tooth, bone or soft tissue so that its further eruption is unluckily described according to its anatomic position. Frequency of impaction: mandibular third molar, maxillary third molar, maxillary cuspid, mandibular bicuspid, maxillary bicuspid, mandibular canine, and maxillary central and lateral incisor. Etiology. First come local factor: microgenetia, crowding of teeth, condensing osteitis, cyst, tumor, and thick fibrous band under the mucosa. Systemic factors: prenatal. First is hereditary, second miscegenation, postnatal: rickets, anemia, tuberculosis, congenital syphilis, malnutrition. Rare conditions are cleidocranial dystosis, oxycephaly, progeria, achondroplasia, cleft palate. Indications: caries, periodontal diseases, pericoronitis, cyst or tumor, orthodontic needs, resorption of adjacent tooth, prosthetic preparation, pre-radiation for head and neck cancer, pain. Contraindications include age, risk to adjacent structure, compromised medical status, prosthetic considerations, socio-economic reasons. Mandibular third molar. Development of mandibular third molar. The third molars are the only teeth that develop entirely after birth. This is the chronology of mandibular third molar. Tooth jump visible 9 years of age. Cusp mineralization 11 years of age. Crown formation 14 years of age. Root formed 18 years of age. Eruption 18 to 24 years of age. Classification: George Winter's classification, Pelen-Gregory's classification. First is George Winter classification given in 1926. It's based on the third molar are classified according to position of its long axis. First is mesioangular, distoangular, horizontal, vertical, inverted, cronin buccovirgin, cronin linguovirgin. Second is Pelen-Gregory's classification. According to the relative depth of third molar in the bone in relation to the second molar, the third molar are classified as in three positions: position A, position B, position C. Position A: when the highest portion of the impacted third molar is at or above the occlusal level of second molar. Position B: when the highest portion of impacted third molar is between the occlusal and the cervical level of second molar. Position C: when the highest portion of impacted third molar is below the cervical line of second molar. According to the space available between the distal surface of second molar and the anterior border of ramus of mandible, the third molar can be classified as classified in three classes: class 1, class 2, and class 3. First, class 1. When the sufficient space available between the distal surface of second molar and the anterior border of ramus to accommodate third molar. Class 2. When the space is inadequate and the third molar is partially present in the space between the second molar and the anterior border of ramus and partially in the ramus. Class 3. When the third molar is totally present in the ramus due to the lack of space. Surgical anatomy. Vital structures surrounded the mandibular third molar are
neuromuscular bundle, retromolar triangle, facial artery and vein, lingual nerve, mylohyoid nerve, long buccal nerve, lingual plate, and musculature. Neurovascular bundle. The neurovascular bundle contains inferior alveolar artery, vein, and nerve enclosed in the facial seal. Radiographic evaluation of the relationship of mandibular canal and root of the third molar form an important part of pre-operative assessment. Roots. In 1990, Roots collected 7 radiographic indicators for a close relationship between the lower third molar and the inferior alveolar canal. The first is darkening of the root. The roots given 7 criteria. उसमें से जो 4 क्राइटेरिया है वो रूट पर डिपेंड करते हैं थर्ड मोलर के, और जो 3 क्राइटेरिया है वो इंफीरियर अल्वेलर नर्व कैनाल के पैटर्न पर डिपेंड करते हैं. सो फर्स्ट इज डार्कनिंग ऑफ द रूट. Darkening of the root usually darkening of the root in 1990, Roots collected 7 radiographic indicators for a close relationship between lower third molar and the inferior alveolar canal. So 7 में से 4 are based on the pattern of root and 3 based on the pattern of inferior alveolar canal. The first is darkening of the root, deflection of the root, narrowing of the root, bifid root apex, interruption in white line of canal, diversion of canal, narrowing of canal. Musculature. First, buccinator. During the surgical removal of deeply seated impacted tooth required detachment of this muscle, lead to post-operative swelling, trismus and pain. Second, temporalis. Temporalis attaches at coronoid and ends on the anterior border of mandible as a tendinous structure. The outer tendon is sectioned during the buccal approach and facilitate adequate bone removal. Masseter. Rarely involved in third molar surgery, post-operative edema may involve posteriorly to the muscle leading to trismus and pain. Medial pterygoid muscle. Not directly involved in third molar surgeries, but during lingual approach, post-operative edema involve this muscle which can lead to trismus. Mylohyoid muscle. During lingual approach, this muscle can partly serve, may lead to transient swallowing difficulties. Lingual nerve. The lingual nerve lies on the medial aspect of third molar. Frequently, the lingual nerve courses submucosally in contact with the periosteum covering the lingual wall of the third molar and the socket. It may run below and behind the root. Radiology. The operation of removing lower third molar can have serious complication if it is not planned with some care. All the feature like size, shape, position, the tooth and consistency of the bone can all be demonstrated in radiograph. Radiographs. Intraoral periapical radiograph, orthopentomoradiograph, and CBCT. Occlusal radiography also done for localizing the impacted tooth is present lingually or buccally. Radiograph of third molar must show axis, position and depth of the tooth, root pattern of impacted teeth, shape of the crown, texture of investing bone, relation of inferior alveolar canal, position and root pattern of second molar. Winter war line. White, umber and red war lines given by George Winter based on the imaginary line drawn on the radiograph to determine the position and depth of impaction. W for white line, A for umber line, R for red line. First white line.
Imaginary line join the enamel cusp of erupted second molar and extending posteriorly over the third molar. This line indicates the depth of the third molar. Umber line, imaginary line joining crest of the interdental septum between the molar. This line shows the bone covering of third molar. Red line, imaginary line perpendicular to the umber line and to an imaginary point application of elevator, usually on the mesial side except डिस्ट्रोएंगुलर मोलर्स. अगर रेड लाइन के डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो थर्ड मोलर उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा. यूज ऑफ CBCT. सो इन CBCT हम easily the relation between the inferior alveolar canal and the third molar root easily हम उसे देख सकते हैं और inferior alveolar canal को हम easily ट्रेस कर सकते हैं और inferior alveolar canal रूट के बक्कली प्रेजेंट है, लिंगुअली प्रेजेंट है या तो दोनों रूट के बीच से पास हो रही है, हम easily फाइंड आउट कर सकते हैं. और CBCT में थर्ड मोलर का पूरा 3D व्यू भी मिलता है जिसकी वजह से प्लान करने में ईजी होता है. Difficulty index. Difficulty index for removal of third molar. Pedersen difficulty index in 1998. Angulation. So Pedersen gives his difficulty index based on different criteria. The first criteria is angulation. So mesioangular. So he gives a different number for different criteria. The first is angulation, mesioangular, horizontal, vertical and distroangular. 1, 2, 3, 4 are respectively. Then then depth level A, level B and level C. 1, 2, 3 respectively. Then Ramus relationship, class 1, class 2, class 3. First 1, 2, 3 respectively. The Pedersen difficulty index, very difficult for 7 to 10, moderately difficult for 5 to 7, minimally difficult for 3 to 4. Then modified Pedersen difficulty index, very difficult for 7 to 10, moderately difficult for 5 to 6, slightly difficult for 3 to 4. Parent scale, easy 1, extraction requiring forceps only, easy 2, extraction requiring osteotomy only. Difficulty 3, extraction requiring osteotomy and the coronal section. Difficulty 4, complex extraction, root resection. Difficulty index for removal of third molar, Kharmaz scale. Kharmaz gave his scale in 2014. The criteria are: the first is angulation, mesioangular, horizontal, vertical, distroangular, 0, 1, 2, 3 respectively. Depth level A, level B, level C. Level A highly occlusal, number is 1. Level B medium occlusal, number is 2. Level C deep occlusal, number is 3. Ramus relationship, class 1 sufficient space, number is 0. Class 2 reduced space, number is 1. Class 3 no space, number is 2. Root forms convergent, divergent and bulbous, 0, 1, 2 respectively. Modified difficulty index according to Kharmaz scale, very difficult for 7 to 10, moderately difficult for 5 to 6, slightly difficult for 3 to 4, easy 1 to 2. Surgical procedure. The surgical procedure will be discussed under following heads: incision, design and repletion of flap, removal of bone, odontectomy, preparation of wound for closure, suturing, post-operative care. Designing of flap. While designing flap, all the basic principles of flap design must be followed. The incision of flap recommended for the third molar surgery are envelope flap or 3-cornered flap. The 3-cornered flap are Ward 1 incision, modified Watts incision. In modified Watts incision, the incision start from the second mesial side of second molar.
Removal of bone. The bone cutting can be done with the help of burr and dental mortar or with the help of chisel and mallet. The chisel and mallet is not preferred method, as a better and more effective rotary instruments are available. The sharp stainless steel carbide burr should be used for the bone cutting. Diamond burrs are not used because they erode the bone and generate more heat, which causes necrosis of bone. Ideal speed of burr should be 18,000 to 20,000 rpm, and the motor should have good torque and facilitate the bone removal at the lower speed. The bone removal should be just enough to expose the crown up to CJ. After removal of the bone, purchase point or groove is prepared on the third molar for engaging the tip of elevator. Odontectomy. Splitting of crown of the tooth is called odontectomy. It is done to facilitate the removal of tooth in pieces without excessive bone cutting. Tooth belongs to surgeon and bone belongs to patient must be followed. This is the case of mesioangular impaction. So इसमें फर्स्ट इंसिजन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे. दिस इज़ द कोरोनल व्यू ऑफ इंसिजन, पिक्चर बी. आफ्टर गिविंग इंसिजन, रिफ्लेक्शन ऑफ फ्लैप को रिफ्लेक्ट करेंगे. देन इस पिक्चर में चीज़ल का यूज़ किया गया है, बट हम रिसेंटली बर और मोटर का माइक्रो मोटर का यूज़ करते हैं. सो बोन कटरिंग करेंगे, क्राउन को एक्सपोज करेंगे. देन इस पिक्चर ई में भी चीज़ल का यूज़ किया गया है, बट हम बर से ही सेक्शनिंग करते हैं. देन सेक्शनिंग स्टार्ट करेंगे अप टू सेक्शनिंग स्टार्ट करेंगे अप टू देन सेक्शनिंग फर्केशन तक करेंगे. देन फर्स्ट डिस्टल पोर्शन रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिवेटर. देन जो मीजियल पोर्शन है उसको डिस्टल सॉकेट में पुश करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिवेटर. देन आफ्टर रिमूवल ऑफ टीथ, देन उसको इस तरीके से सूचर करेंगे. दिस इज द केस ऑफ वर्टिकल इम्पैक्शन. This is also a case of vertical impaction. This is the case of distoangular impaction. This is the case of horizontal impaction. So इसमें this is the case of horizontal impaction. सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंसिजन लेंगे, देन फ्लैप रिफ्लेक्ट करेंगे. देन विद द हेल्प ऑफ राउंड बर हम इस तरीके से पिक सी में दिया हुआ इस तरीके से होल्स मार्क करेंगे. देन आफ्टर मार्किंग दैट होल ज्वाइन द ऑल द होल एंड एक्सपोज द क्राउन आफ्टर बोन कटरिंग. देन हम क्राउन को दो पार्ट में सेक्शन करेंगे. पहले इसका डिस्टल पार्ट निकालेंगे जो सुपीरियरली प्लेस्ड है. देन इसका मीजल पार्ट निकालेंगे जो इन्फीरियरली प्लेस्ड है. देन उसके बाद एक परचेस पॉइंट बनाएंगे रूट पे. देन रूट को जो स्पेस अवेलेबल है जो जहाँ से हमने क्राउन निकाला है उसमें पुश करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिवेटर. इंडिकेशन फॉर ओडेंटेक्टोमी: लार्ज bulbous crown, deep horizontal mesioangular impaction, distoangular impaction with plenty of bone cover, unfavorable root form like divergent locking or dilacerated root, hypercementosed root is close proximity to inferior alveolar canal, badly carious or fragile tooth structure. Debridement and preparation of food closure.
The area is packed and achieve the initial hemostasis and the thoroughly inspected for the presence of any foreign body like fragments of the tooth, loss of bony fragment, granulation tissue or any periapical pathology. The alveolar bone margins are palpated and any loose fragments divide of periostal attachments which can be turned to non-vital are removed. The sharp bony margins are filed off and made smooth. Any lacerated margin of the flap are carefully trimmed as they can get necrosis and result of dehiscence of wound. Suturing. The closure of prepared surgical wound is done with the help of 3-0 silk and Vicryl suture. The simple interrupted suture are placed. The first suture that should be placed is the suture distal to the second molar because there is a accumulation of food debris or accumulation of food which causes periodontal diseases or periodontal pocket formation. To avoid this, the first suture should be given on the distal to the second molar. The suture should not be placed too tightly. The suture should be equidistant and should exert uniform pressure on the wound edges. The sutures are removed on the seventh day postoperatively. Post-operative care. A pressure pack is given post-operatively which should be maintained for about an hour to achieve adequate hemostasis. To prevent excessive edema formation, cold compression are advised intermittently for first 24 hours. Advise warm saline gargle after 24 hours of disimpaction. Patient is prescribed antibiotic, analgesic, steroid as an anti-inflammatory drugs. Oral hygiene and wound hygiene are maintained by antiseptic gargle using chlorhexidine or povidone iodide solution. Prescribe soft and semi-solid diet. Maxillary canine impaction. The permanent maxillary canine are developed deep within the maxilla. They complete their development late and emerge into the oral cavity after the neighboring tooth have erupted. Due to these circumstances, the eruption disturbances are more common in maxillary canine. The prevalence of the non-eruption and ectopic eruption of the maxillary canine reported at the range of 0.8 to 2.3%. It is seen with the higher frequency in female as compared to male. Most commonly it found unilaterally. Most common position of impacted canine is palatal to the lateral incisor. The only 15% cases of the direction of impaction seen buccally. Etiology: space loss, delayed resorption of primary canine, root of primary canine, lack of guidance of gubernacular canal, hereditary, obstruction of eruption pathway, cleft lip and palate cases, and due to trauma. Classification of maxillary canine impaction. Class 1, impacted canine located in the palate, horizontal, vertical, semi-vertical. Class 2, impacted canine located in the buccal side, horizontal, vertical, semi-vertical. Class 3, impacted canine located in both palatal as well as buccal alveolar bone. Class 4, impacted canine located vertically between the incisors and premolar. Class 5, impacted canine located in edentulous maxilla. Management. Numerous treatment options exist for the ectopically erupting or impacted canine. First is no treatment, prophylactic space augmentation, extraction of primary canine, guided eruption, surgically exposed and orthodontic repositioning, removal of canine. Surgical removal. The various technique varies
The position of the canine, either labial or palatal approach, should be according to the position of crown. So this is the case of buccally placed maxillary canine. So in this case, the incision जो incision line हम draw करेंगे from the lateral incisor to the premolar, the incision given on the neck of the gingiva, then a vertical releasing incision is given, then flap is reflected, then उसके बाद एक bulge feel होगा कैनाइन का, देन वहाँ की बोन गटरिंग करेंगे, उसके बाद क्राउन को एक्सपोज करेंगे, देन उसको एलिवेट करने के लिए ट्राई करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिवेटर. अगर एलिवेट नहीं हुआ तो क्राउन को सेक्शन करेंगे, सेक्शन करके पहले क्राउन पोर्शन निकालेंगे, देन एक परचेस पॉइंट बनाएंगे रूट पे, देन विद द हेल्प ऑफ एलिवेटर हम रूट पोर्शन को निकालें. देन दिस पिक्चर शोज दैट पैलेटली प्लेस्ड कैनाइन. इस सिचुएशन में हम इंसिजन लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम सेंट्रल इंसाइजर टू द डिस्टल पोर्शन ऑफ सेकेंड प्रीमोलर. देन इंसिजन इज गिवन ऑन द नेक ऑफ जिंजाइवा. इफ मोस्टली रिलीजिंग इंसिजन इसमें अवॉइड करेंगे जो हम मिड पैलेट के मिड में देते हैं फ्रॉम सेंट्रल इंसाइजर टू द पोस्टीरियरली ऑन द मिड लाइन ऑफ द पैलेट. और अगर हमें ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए तो हम मिड लाइन में इंसिजन देंगे, बट उसके बाद नेज़ोपैलेटाइन ब्लड वेसल डिस्टर्ब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, तो उससे बहुत हेवी ब्लीडिंग होने के चांसेस है. सो उसके लिए हम गॉज अप्लाई करेंगे और वहाँ प्रेशर अप्लाई करेंगे फॉर 3 to 5 minutes टू कंट्रोल द ब्लीडिंग. आफ्टर कंट्रोलिंग द ब्लीडिंग, देन हम जहाँ बल्ज फील हो रहा है पैलेटल बल्ज, वहाँ का बोन गटरिंग करेंगे, क्राउन को एक्सपोज करेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ एलिवेटर हम क्राउन को रिमूव करेंगे. दिस इज़ द केस ऑफ क्लास 3 पोजिशन. इसमें जो कैनाइन है वो बक्कली एंड पैलेटली बोथ साइड, इसका जो क्राउन पोर्शन है वो बक्कली प्लेस्ड है, और जो अपाइकल पोर्शन है वो जो क्राउन पोर्शन है वो पैलेटली प्लेस्ड है, और जो अपाइकल पोर्शन है वो बक्कली प्लेस्ड है. सो सबसे पहले हम बक्कल अप्रोच लेंगे, बक्कल फ्लैप रिफ्लेक्ट करेंगे, देन उसके बाद हम जो बल्ज फील हो रहा है वहाँ बोन गटरिंग करके रूट को एक्सपोज करेंगे, देन रूट को सेक्शन करेंगे विद द हेल्प ऑफ बर और अ चीज़ल, और आफ्टर सेक्शनिंग विद द हेल्प ऑफ एलिवेटर हम रूट पोर्शन को रिमूव करेंगे. देन उसके बाद पैलेटल फ्लैप लेंगे, देन पैलेटल फ्लैप लेने के बाद क्राउन को एक्सपोज करेंगे विद गटरिंग, देन उसके बाद विद द हेल्प ऑफ एलिवेटर हम क्राउन को रिमूव करेंगे. Complications: perforation of maxillary sinus floor, forming an oroantal communication, perforation of nasal floor forming a oronasal communication, hemorrhage for the greater palatine artery due to accidental damage while using palatal approach, damage to adjacent tooth root from burr, chisel or application of excessive force with the elevator. Impacted maxillary third molar. The maxillary third molar erupt at approximate age of 20 years. The maxillary third molar are often seen erupted bucco-virgin. This position results into impingement of soft tissue between the cusp of the tooth and the anterior border of coronoid process, leading to traumatic ulcer and the recurrent pain. Classification: based on the relative depth of bone. Class A: the lowest portion of the crown is in level with or below the occlusal surface of maxillary second molar. Class B: the lowest portion of crown is between level of occlusal surface and the cervical line of maxillary second molar. Class C: the lowest portion of the crown is at the above the cervical line of maxillary second molar. Based on the position of long axis with relation to second molar: vertical, horizontal, mesioangular, distoangular, inverted, linguoangular, buccoangular.
based on the relation to sinus approximation. No bone or a thin partition of bone between the impacted maxillary third molar and maxillary sinus. No sinus approximation. 2 mm or more bone is present between the impacted maxillary third molar and the maxillary sinus. Surgical removal. Several incision can be used for removal of impacted third molar based on the whether a buccal or palatal approach is used. The buccal circular incision with vestibular extension, palatal incision. The first picture show the buccal approach. So इसमें हम फर्स्ट इंसिजन ड्रॉ करेंगे, देन इंसिजन देने के बाद हम फ्लैप रिफ्लेक्ट करेंगे, देन बोन गटरिंग करेंगे. एज़ कम्पेयर टू मैंडिबल, मैक्सिला में कम बोन गटरिंग लगती है क्योंकि मैक्सिला पोरस होता है. देन हम बोन गटरिंग करने के बाद विद द हेल्प ऑफ एलिवेटर मैक्सिलरी थर्ड मोलर को डिस्टलाइज करेंगे और उसको रिमूव करेंगे. आफ्टर रिमूविंग हम सूचर प्लेस करेंगे. एंड सेकेंड पिक्चर शोज दैट पैलेटल अप्रोच. सो पैलेटल अप्रोच के लिए हम पैलेटल इंसिजन ड्रॉ करेंगे, देन इंसिजन देंगे, देन पैलेटल फ्लैप लेने के बाद हम पैलेटल बोन को गटर करेंगे जहाँ टूथ प्रेजेंट है. देन विद द हेल्प ऑफ एलिवेटर हम उसको रिमूव करेंगे. कॉम्प्लिकेशन. रेजिस्टेंस टू रिमूवल, हर्निएशन ऑफ बक्कल फैट पैड इनटू द सर्जिकल साइट. सो बक्कल फैट पैड के हर्निएशन को अवॉइड करने के लिए जो हम बक्कल रिलीजिंग इंसिजन देते हैं वो ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे, वो कम ही रखेंगे क्योंकि अगर हम ज़्यादा एक्सटेंड करते हैं सो बक्कल फैट पैड एक्सपोज हो जाता है और उसका हर्निएशन बक्कल वेस्टिब्यूल में हो जाता है. एंड देन उसको वापस अंदर डाल के सूचर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. डिस्प्लेसमेंट ऑफ टूथ इनटू द इंफ्राटेम्पोरल फोसा, डिस्प्लेसमेंट into the sinus, hemorrhage because in palatal approach damage to greater palatine artery. Then fracture of tuberosity. Impacted mandibular canine, most usually it is vertically impacted, found close to labial surface. So surgical removal. So this is the case of buccally placed impacted mandibular canine. So इसमें हम सबसे पहले इंसिजन लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम सेंट्रल इंसाइजर टू फर्स्ट प्रीमोलर. नेक ऑफ जिंजावा में हम इंसिजन देंगे, देन 2 वर्टिकल रिलीजिंग इंसिजन देंगे. बट इन प्रीमोलर साइड रिलीजिंग इंसिजन थोड़ा कम एक्सटेंड करेंगे बिकॉज बिटवीन द अपाइसेस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड प्रीमोलर मेंटल फोरामेन होता है जहाँ से मेंटल लो बाहर आती है. सो उसको डैमेज ना हो इसलिए. सो फ्लैप रिफ्लेक्ट करने के बाद हम विद द हेल्प ऑफ राउंड पर हम इस तरीके से होल बनाएंगे. देन जॉइनिंग ऑल द होल रिमूव, देन बक्कल कॉर्टिकल प्लेट रिमूव करेंगे और क्राउन को एक्सपोज करेंगे. देन क्राउन को वहाँ से एलिवेट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ एलिवेटर ट्राई करेंगे. अगर एलिवेट नहीं होता है, ज़्यादा रेजिस्टेंस फील होता है, सो हम क्राउन को सेक्शन करेंगे. सेक्शन करने के बाद उसका कोरोनल पोर्शन बाहर निकालेंगे. देन वहाँ स्पेस क्रिएट हो जाएगा. देन हम विद द हेल्प ऑफ बर रूट में परचेस पॉइंट बनाएंगे. देन विद द हेल्प ऑफ एलिवेटर हम रूट को रिमूव करेंगे एंड आफ्टर दैट हम सूचरिंग करेंगे. impacted mandibular premolar. The impacted mandibular premolar are usually found in vertical or near vertical position or more frequently with lingual inclination. Impacted supernumerary mandibular premolar are frequently found. Surgical removal. So this is the removal of mandibular impacted premolar. This is lingually inclined, so lingual approach is taken. So first incision is drawn and the flap is reflected. Then ये जो केस है इसमें जो मोलर है
वो मीजली शिफ्ट हो गया है, तो जिसकी वजह से सेकेंड प्री मोलर को आने के लिए जगह नहीं है, सो इसलिए वो इम्पैक्टेड हो गया है। सो आफ्टर बोन गटरिंग एक्सपोजिंग द क्राउन, हम एलिवेट करने के लिए ट्राई करेंगे, बट स्पेस अवेलेबल नहीं है तो ये एलिवेट नहीं होगा, तो इसके लिए हम इसको सेक्शन करेंगे। सो इसका क्राउन को सेक्शन करके फर्स्ट हम क्राउन को रिमूव करेंगे, देन उसके बाद हम रूट पे परचेस पॉइंट क्रिएट करके विद द हेल्प ऑफ एलिवेटर हम रूट को रिमूव करेंगे। दिस इज सुपरन्यूमररी प्रीमोलर। सो इन दिस केस the crown portion is placed lingually and the apical portion placed buccally. So in this situation हम दोनों साइड के फ्लैप्स लेंगे। तो सबसे पहले हम लिंगुअल फ्लैप लेंगे, उसके कोरोनल पोर्शन को पूरा एक्सपोज करेंगे, देन एक्सपोज करने आप बोन गटरिंग करके पूरा कोरोनल पोर्शन को एक्सपोज करेंगे, देन एक्सपोज करने के बाद हम बक्कल फ्लैप लेंगे, एंड देन बक्कल फ्लैप लेने के बाद बक्कल फ्लैप एक्सपोज करने के बाद हम एक ड्रिल लेंगे, विद द हेल्प ऑफ राउंड बर हम ड्रिल करेंगे। ड्रिल करके हम टूथ को अप्रोच करेंगे विद द हेल्प ऑफ ड्रिल। देन टूथ को अप्रोच करने के बाद एक ब्लंट इंस्ट्रूमेंट लेंगे, देन ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से हम टूथ को पुश करेंगे ताकि वो लिंगुअल साइड से अपने क्रिप्ट से बाहर निकले। हॉरिजॉन्टली impacted mandibular premolar. So in this case the mandibular premolar is impacted in such a way that the premolar present in between the second molar and mandibular first premolar, and इसमें mandibular फर्स्ट मोलर का रूट डेवलपमेंट नहीं हुआ क्योंकि उसके नीचे प्री मोलर प्रेजेंट है। सो इसमें हम फ्लैप रिफ्लेक्ट करेंगे, देन बोन गटरिंग करेंगे, बट आफ्टर बोन गटरिंग टूथ को निकलने के लिए कोई पैसेज नहीं है। सो हम रूट को दो पार्ट में सेक्शन करेंगे। सो फर्स्ट सर्वाइकल लाइन से सेक्शन करेंगे, देन उसके बाद थोड़ा उसके नीचे से सेक्शन करेंगे, देन पाथ क्रिएट करेंगे, देन वो सेक्शन पार्ट को हम बाहर रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिवेटर। आफ्टर डैट हम रूट पे परचेस पॉइंट क्रिएट करके रूट को रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिवेटर, देन क्राउन को रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिवेटर, देन उसके बाद हम उसे सूचर कर देंगे। दीज ऑल आर माई रेफरेंसेस, बोरले एंड आर्चर। थैंक यू।